and the delta G for a non-spontaneous process is a positive value. We'll be having a positive value. The next important part, which is a continuation from here, is the effect of temperature on delta G. Is right, effect of temperature on delta G. On delta G. You should also remember the formula. Can anyone tell me what is delta G equal to? Delta G, it is equal to delta H minus, anyone remembers? Delta H minus? No one. Can all of you guys flip some pages and tell me delta H minus what? T delta S. Yes, very good. Delta H minus T delta S. Okay? Minus T delta S. Now, in this particular case, is थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस और के पीछे. If delta G, अगर आपके पास negative value आए, that means if you are getting a negative value for delta G, then our process is spontaneous. And if you are getting a positive delta G, you don't need to write this down, please listen. Then we will say that it is a non-spontaneous process, right? Non-spontaneous process if the delta G is positive. Okay. Now, delta H, this whole thing can be either positive and this can be negative also. Enthalpy of a reaction positive भी हो सकता है और क्या हो सकता है, negative भी हो सकता है. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. ये बात समझ में आई? अच्छा. Now the most important part here is the temperature. Temperature जो है ना आपका, temperature जो है आपका, this is always positive. Temperature कभी भी negative हो ही नहीं सकता because we are talking in the terms of Kelvin, and in Kelvin scale we don't have negative Kelvin, right? Temperature क्या है? Always. आपको ध्यान रखना है, it is always positive. हमेशा क्या रहेगा? It will be positive, always positive. अब जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव, है ना. डेल्टा एस क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इफ आई कंबाइन दीज टू, जब आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, सो दिस होल टर्म विल बी नेगेटिव. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और लेकिन आपके पास ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको हम अगर दोनों पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना. If we are having temperature तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या मिल जाएगा आपको इधर से? होल टर्म विल बी नेगेटिव. ये बातें समझ में आई सबको? जल्दी बताएं. अब्दुल हमीद, हर्षा एंड मार्टिन. Yes, sir. Abdul Hamid, what about you? Yes, sir. Okay. Now please see, don't write anything. We'll be talking about the sign of delta H, the sign of delta S, ठीक है? Sign of delta S. Then we'll be talking about the temperature, low या high. ठीक है, temperature low या high होगा सर. उसके बाद according to temperature, what will be the value of delta G? What will be the value of delta G? From the delta G, we can see that the reaction will be either spontaneous or non-spontaneous. So reaction के बारे में, और जब आपको reaction के बारे में पता चलेगा, then we can also talk about the exothermic or the endothermic process, whether it is exo or it is endo. ठीक है, ध्यान देते हैं. सबसे पहले मान लेते हैं डेल्टा H आपके पास क्या है? It is negative. डेल्टा H is negative और डेल्टा S को ले देते हैं पॉजिटिव. ठीक है, डेल्टा H is negative. आई एम इरेजिंग दीज थिंग्स ना, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज सी हियर, यू हैव टू कमेंट अबाउट डेल्टा जी. है तो डेल्टा जी इट इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, मल्टीप्लाई माइनस. ठीक है, माइनस. टेम्परेचर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बताओ भाई, टेम्परेचर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? जल्दी बोले. Positive. पॉजिटिव. वेरी गुड. और डेल्टा एस कैसा लिया हम लोगों ने? Positive. पॉजिटिव. ठीक है. नाउ अब देखिए, यू कैन प्लग इन सम नंबर्स, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. लेट अस सपोज वी आर हैविंग हियर -2 माइनस, या आप कुछ भी नंबर ले लें, व्हाटएवर पॉजिटिव नंबर यू टेक हियर इट विल बिकम नेगेटिव, और द
लास्ट आंसर दैट यू आर गेटिंग -2 माइनस कुछ भी आएगा, इट विल बी नेगेटिव ओनली, राइट? -5 -6 भी आ जाएगा। टेम्परेचर एटलीस्ट जो होगा, कम से कम जो होगा वो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, राइट? 1 एंड देन यू विल हैव सम काइंड ऑफ डेल्टा एस 2 3 कुछ भी, इट विल बी व्हाट? माइनस एंड माइनस। व्हेन यू हैव माइनस माइनस, अरे एडिशन मत कर देना यहाँ पे, मतलब ऐसे में बोल देना कि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है। -2 -3 आ गया तो क्या हो जाएगा? -5। So no matter what the value of temperature is, no matter what the value of temperature is, high या low, this will be always negative. जो आपके पास वैल्यू आने वाली है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप। यू हैव टू प्लग इन, ये आपको खुद समझना पड़ेगा यहाँ पे। जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बताएं अब्दुल हमीद, हर्षा, क्योंकि आगे आप लोगों को करना है। द नेक्स्ट ऑफ द सीक्वेंस यू हैव टू डू इट, है ना? चलिए बताएं। ऑल गॉट इट हर्षा? Yes, sir. व्हाट अबाउट यू गाइस, अब्दुल हमीद एंड मार्टिन? Yes, sir. मार्टिन, व्हाट अबाउट यू? Yeah. ठीक है। So temperature, at any temperature, can have any temperature, and the delta G will be negative, and the delta G is negative, the reaction will be spontaneous. And reaction, if it is spontaneous, then obviously it will be what? Exothermic. It will be exothermic. अब इसका reverse case ले लेते हैं. We have positive delta H and negative delta S. Now you plug in the numbers, है ना? Temperature को 1 रख लें और ये बहुत ज्यादा रख लें. And tell me what is the value of delta G. दोनों केस में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में करके देखें। टेक द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच। दो डेल्टा एच को हमेशा ऐसे रखें, डेल्टा एच इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू +2, है ना? और डेल्टा एस आप रख लीजिए यहाँ पे -4 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। एंड टेम्परेचर की वैल्यू एक बार लो रखिए, लाइक 1 2 3 ऐसा, और एक बार 100 रख लीजिए and see if there is any change on the delta G value. All of you have to answer, है ना? हम आंसर करने नहीं वाले, you will send me the answers on chat as the value of delta G. पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिल रहा है आपको? या फिर आपको लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव मिल रहा है, हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव मिल रहा है? You have to send the answer on the Zoom chat. We have to find delta G, right? It will be positive or negative. Temperature can be any temperature. Yeah, temperature can be anything. So we But can you have to choose. take, yeah, you have to take two cases. एक बार आप लो लीजिएगा और एक बार बहुत हाई लीजिएगा. And you have to see if that's making any difference or not. ठीक है, you have to see whether it is making any difference or not. Sir, if the reaction is non-spontaneous, it is endothermic. And it is non-spontaneous. You just need to tell me the sign of delta G. That's it. उसके आगे आप लोग you have to tell me. आप लोग लिखिए मत अभी नोटबुक में, ठीक है ना? You tell me, then I will confirm ना सही लिखा आपने, नहीं सही लिखा है।
Positive, right? Why? whatever value you are putting, you are getting it positive, है ना? Yeah. थोड़ा आप लोग और भी ऊपर नीचे करके देख लिया होगा, आई होप, राइट? सो इफ इट इज, और डेल्टा एस आपके पास क्या है? डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव है, ठीक है ना? थोड़ा सा ना यहाँ पे आप समझिए जरा बात को। इफ यू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट टू थिंग्स, कि हम लोगों के पास दो चीजें थी। We had delta H and delta S. These were the two criteria for anything to be spontaneous or non-spontaneous. और वहीं से हमारे पास delta G आया था, ठीक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे। और delta H जो एनर्जी की बात है, so if you see any process which is spontaneous, जैसे falling of a iron brick, है ना? Iron brick is falling down, potential energy is decreasing, right? So delta H के केसेस में delta H अगर आपके पास नेगेटिव है, delta H is negative, तो ये favorable for spontaneous है। Can you see that? That if the delta H is negative, if the energy is decreasing, potential energy decrease करता तभी ना, the block of iron is internally going down. अच्छा, when I talk about delta S ना, तो delta S के लिए जो favorable condition है, it is positive. That means, as you saw that in a block of iron, if you have 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius, the dispersion of energy was a spontaneous process. So the entropy should be positive, और delta H क्या आना चाहिए आपके पास? Delta H should be negative. इस वजह से negative and delta S at any temperature, this is also favorable और this is also what favorable, है ना? दोनों ही केसेस क्या हो गए? Favorable वाले हो गए. That is why at any temperature the delta G is coming to be negative. But if you are taking delta H as positive, that is unfavorable, and delta S as negative, that is unfavorable. Now both of these are what? Unfavorable. So at any temperature you would get delta G as positive. There will be no change, and this will be non-spontaneous, and this will be endothermic reaction. This will be endothermic reaction. Now we have to see some other cases. For example, when both of these are negative, ये भी negative है आपके पास, and this is also negative. Now the temperature will play a role, because as you can see, delta H is negative, that is favorable. But delta S is what? Negative, which is unfavorable. Delta S क्या है? Negative, that is unfavorable. ठीक है? ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। अरे guys, listen. सुनो। अरे भाई मार्टिन भाई, क्या लिख रहे हैं आप? मार्टिन, what are you writing? The table. अभी रुक जाओ, समझो पहले ना, समझो ध्यान से। कितना समझ में आया आपको? सही है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे, अब आपको ना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक यू डोंट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज, थोड़ा कंसेप्चुअली करने की कोशिश करेंगे। डेल्टा एच इज तो नेगेटिव, वो तो फेवरेबल है हमारे लिए, सही है ना? करेक्ट है हर्षा, मार्टिन एंड अब्दुल हमीद? डेल्टा एच इज नेगेटिव, वो हमारे लिए फेवरेबल है। इस वाले पोर्शन में अगर आपने क्या किया है, इस अगर यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव आ गया, डेल्टा एस क्या आ गया? दिस इज नेगेटिव, ठीक है? अगर आपको इस वाले पोर्शन को, इफ यू हैव टू कीप दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन को आपको क्या करना है? फेवरेबल बनाना है, तो ये पोर्शन भी आपका कम से कम होना चाहिए ना, इट शुड हैव द लीस्ट वैल्यू। सही है, करेक्ट है ना गाइस? देखो ना, जब डेल्टा एस पॉजिटिव था, इफ द डेल्टा एस वाज पॉजिटिव, देन पॉजिटिव और टेम्परेचर मिलके क्या बन जा रहे थे? नेगेटिव बन जा रहे थे। सो ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव में रहना चाहिए, और ये माइनस साइन के साथ भी कहाँ रहना चाहिए? नेगेटिव में रहना चाहिए। बात समझ रही है? बट इफ वी आर हैविंग डेल्टा एस एज नेगेटिव, डेल्टा एस क्या हो गया है? नेगेटिव। नाउ कैन दिस पर्टिकुलर वैल्यू भी नेगेटिव? कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव हो सकता है क्या कभी भी? बताएं। नो सर। बिकॉज डेल्टा एस में -2 रखो, -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा हमेशा। मार्टिन दिखा आपको? इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, माइनस की डेल्टा एस वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? बट वी हैव टू कीप दैट लीस्ट ना, उसको बहुत कम करके रखना है इफ यू वांट फेवरेबल थिंग्स। तो कम कैसे होगा? कम होगा जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे? इफ द टेम्परेचर इज लो, so this whole thing will be less positive, this whole thing will be, अभी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो और पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमको तो चाहिए था नेगेटिव। so if we can't get to negative, we will at least try it to get to zero, zero के नजदीक। so what we have to do, we have to keep the temperature low so that this negative T delta S, it has less value. So if you are having delta S as negative, then the delta G can be negative, but at lower temperature, at low temperatures,
लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, डेल्टा जी विल बी व्हाट, नेगेटिव, एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, और यही चीज अगर हम लिखें नेगेटिव है और नेगेटिव है, एंड वी आर हैविंग टेम्परेचर इज वेरी हाई, एट हाई टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, देन द डेल्टा जी विल बिकम पॉजिटिव और स्पॉन्टेनियस होकर ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है, इफ यू वांट टू सी सम एग्जांपल्स, यहाँ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार हम लोग। इफ आई एम प्लगिंग इन सम वैल्यूज, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जी नेगेटिव नेगेटिव के दो केसेस लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज डेल्टा एच इज 200 जूल्स, ठीक है, -200 ना, नेगेटिव है, -200 जूल्स। डेल्टा एस इज हियर, लेट अस सपोज 100 जूल्स, पॉजिटिव 100, ठीक है ना, पॉजिटिव 100 है यहाँ पे। नाउ लेट अस सपोज द टेम्परेचर आपके पास, देयर आर टू टेम्परेचर्स। एक केस में आपके पास टेम्परेचर है, व्हेन द टेम्परेचर इज लेट अस सपोज 20, ठीक है ना, 20 ज्यादा हो जाएगा। लेट अस सपोज व्हेन द टेम्परेचर इज 1, इफ द टेम्परेचर इज 1, टेल मी डेल्टा जी क्या आ जाएगा, बताइए, वैल्यू प्लग इन करके देखिए। -200 माइनस टी आपके पास 1 है, मल्टीप्लाइज बाय डेल्टा एस कितना हो गया, 100, विच इज इक्वल टू -100 ओनली। दिखा सबको, व्हेन द टेम्परेचर इज 1, वी आर गेटिंग द डेल्टा जी वैल्यू एज व्हाट, एज नेगेटिव। बट मान लेते टेम्परेचर आपके पास हो जाए 5, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव में ना, माई बैड, थोड़ा उल्टा हो गया क्या, -200 -1 इंटू -100, which will be equal to -200 plus 100, which will be equal to -100। ये पहला वाला केस था। अब मान लेते टेम्परेचर आपके पास है 5, तो टेम्परेचर आई हैव इंक्रीज्ड नाउ, -200 वैसी का वैसी, 100 की जगह ये क्या हो जाएगा, +500, एंड नाउ द डेल्टा जी विल बी कमिंग एज positive 300। so at low temperature it was negative, at high temperature it was positive। now we have two more cases, बस ज्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह से बस आप लोग को आगे जाके you just have to see here, है ना, ये टेबल लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, you should be very well versed with this table। नेगेटिव नेगेटिव हो गया, अब देख लेते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव। when we have delta s as positive, then obviously this is a favorable condition, तो ये वाले पोर्शन को हमको मैक्सिमाइज कर देना है ना। when we have delta s positive, इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। in order to maximize, this will be at high temperature, delta s नेगेटिव हो जाएगा, and this will be spontaneous, this will be also exothermic, and when we have positive at low temperature, the delta G will be positive and the reaction will be non-spontaneous and it will be endothermic। ठीक है, इसको प्लीज कॉपी कर लो। After that you will write just one statement, gives free energy or in general we call it free energy is the measure of useful work done by a system। So for delta H, positive is favorable. नहीं, नेगेटिव फेवरेबल, डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है that is favorable, that is good thing for delta G। why, what happened, tell me। No, so I just asked. And so for अच्छा, delta H, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो वो फेवरेबल हो जाता है। okay.
Let me know once you have done writing this table. Krishna, Abdul Hamid, all of you done? Let me know. Martin and Abdul Hamid, please let me know once you're done. Yeah, I'm done, sir. Done? Okay, fine, great. Third. Right, next. Gibbs free energy. And standard Gibbs free energy. Okay, so this also gives you a relationship between the Gibbs free energy and the equilibrium. Okay? But first of all, we have to look at the Gibbs free energy and standard Gibbs free energy. That means when we have standard Gibbs free energy, that is at standard conditions. The Gibbs free energy is written as simply delta G, which is equal to delta G naught plus RT ln Q. Now, there are a few new terms here. तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए. सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास you have Q. What is Q? Q is known as reaction quotient. PIENT. ठीक है, reaction quotient. What is reaction quotient? For example, I have a reaction AA. That means A is the coefficient of A plus B is the coefficient of B, and it is giving you C is the coefficient of C and D is the coefficient of D. So simply reaction quotient is the ratios of the amount of product. Okay, we will write the products, right, C and D, and then we will have A and B here. A to the power A and B to the power B. So this is the reaction quotient. That's it, simply. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ये समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा जरा. Also write one more thing, please see. Here we have seen Ln. Okay, so what is Ln? If I write Lnq, or rather I should write in general, let us suppose we have Ln of A. It is equal to, you must have seen this term log, right? Log with a base E, log A of a base E. You will understand these terms when we come to equilibrium chapter. I will take a portion on log, तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा. यहाँ पे बस आपको देखना है एक अच्छा समझिए, थोड़ा सा होता है, हम इसको समझा देते हैं ना. What is 10 to the power 2? 100. समझ लीजिए, लॉग समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए लॉग का जल्दी से, बिल्कुल है ना. 10 to the power 2 is equal to 100. हाँ या ना, जल्दी बताएं. सही है? अरे हाँ ना, जल्दी तो बोलो. सही है. अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 it is equal to how much? 10 है ना. अब देखिए जरा, here if you see that these two equations, here we are involving three numbers, right? We have a number 10, we have a number 2, and we have a number 100. Correct, guys? Yes, sir. Yes. है ना. And we have represented 100 using 10 and 2. हाँ ना, बोलो भाई. We have represented 100 using 10 and 2. We have represented 10 using 2 and 100, square root of 100. Now there should be a way to represent 2 also, right? ऐसे 2 के साथ 9 सा भी क्यों? ठीक है. Now this 2 can be represented by using 110 as such. Log of 100 with base 10 is equal to 2. Simply क्या है देखिए जरा, 10 to the power how much? What is log 100? It is 10 to the power how much will be equal to 100. So basically you are solving for this equation. 10 to the power x is equal to 100. What is x? बात समझ में आई. What is log? समझ में आ गया सबको? Abdul Hamid, Martin and Harsha. Yes, sir. 10 to the power how much is equal to, somewhat आपको समझ में आ गया. Now here we have a base which is e. Then we have to convert this to log with the base of 10 ना, इस तरह का log में convert करना रहता है. So we have to multiply 2.303 times log a.
अब बेस इसका क्या हो जाएगा 10. So in order to convert the base from e to 10, I have to multiply 2.303. ठीक है, I have to multiply 2.303. This is mathematics, nothing else. ठीक है, e से कहां कन्वर्ट हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया. इतनी बात अगर आपको समझ में आती तो ध्यान से एक बात बताइए. एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, दैट इज कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर. बट अगर हल्की चीजों में हम बताएं, we have learned about the macroscopic properties in this particular chapter: volume, mass, temperature, right, pressure. You have learned now. When none of these things are changing, ना pressure change हो रहा है किसी का, ना concentration change हो रही है किसी की, ना किसी का temperature change हो रहा है, those that point is known as equilibrium. उस point को क्या बोलते हैं, equilibrium. When apparently there is no change in the system, that is equilibrium. If there is no change in the system, ध्यान सुनिएगा मेरी बात. If there is no change in the system, we can say ना, G final will be equal to G initial. जब change कुछ हो ही नहीं रहा है, so what final and what initial? There will be nothing final, nothing initial. Therefore, delta G, that is equal to G final minus G initial, will be equal to 0 ना, दोनों बराबर हो गए तो. So हम क्या कह सकते हैं, delta G will be equal to 0 at equilibrium. Is that clear? Yes or no? When there is nothing happening, so there will be no change ना, कुछ हो नहीं रहा है तो. Now I will plug in the value of 0 here. We will write, as we know, delta G, that is equal to delta G naught plus RT log of Q. अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, if nothing is changing, concentration भी change नहीं होगा, right? So concentration of the product and the concentration of the reactant will become not equal but constant. हाँ या ना, constant हो जाएगा ना reaction का, reactant का मान लीजिए 4 mole per liter है, so that is 4 mole per liter, and the product is 6 mole per liter. For 10 hours it is 6 mole per liter, it is not changing. So this numerator will be constant, denominator will be constant. So at that time, when G it is equal to 0, Q also becomes a constant, where Q it is equal to K, we call as equilibrium constant. R T log K हो जाएगा यहाँ पे, and then we can write here delta G is 0. So 0 it is equal to delta G naught plus RT log of K. Now here from here I can write delta G naught, it is equal to minus RT. एक सेकंड, थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, I forgot the 2.303. इसको थोड़ा सा पैसे बस कर ले, मल्टीप्लाई 2.303. 2.303 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हम, because earlier it was ln ना, I have written log 2.303. So from here you have to maybe erase. So delta G will be equal to minus 2.303 RT log K. So this is a relationship जो आपको एक सवाल में इस्तेमाल होने वाला है. ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए. We can also write this as delta G naught will be equal to delta H naught minus T delta S naught, which will be equal to minus 2.303 RT log K. Let me know once you're done writing. Sir, can you scroll up? Yeah, sure.
Please let me know once you have done. It's not done. Done. Okay. So Martin and Harsha done. Please let me know. Yes, sir. Harsha, you are still writing? Done, sir. ध्यान दीजिएगा जरा. Now we can summarize a few things. उसके बाद हम एक काम करते हैं. Let us start with the questions itself. Let me get the NCERT. Can all of you get the NCERT textbook? आपके पास open? In that ना, let us do a few. The एक ना problem है आपके पास, problem 6.7. That will be in page number. I don't know what book you have, new book or old book. I have old book and it is in page number 172. It's an example. Example question है 6.7. Basically, this is the question. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. Yes, sir. Same page. Got it? Actually got it? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए सवाल को. See here. A symbol coming out from a pool is covered with a film of water. It is covered with a film of water about 18 gram. So the mass of H2O that they have given, mass of H2O, it is equal to 18 grams. Okay. How much heat must be supplied? So they are asking about how much heat. That means they are asking about the Q. Heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin. Okay. I think that at 298 Kelvin is the temperature. Calculate the internal energy of vaporization. They're also asking the delta U of vaporization. Okay. At 298 Kelvin. Delta H for vaporization they have given as delta H of vaporization. They have given it as 44.01. 44.01 kilojoule per mole. ठीक है. So I'm just converting this into 4401. I think there will be 0 joules per mole, right? Correct है. किलो को हमने बस किलो जूल को जूल पर मोल में कर लिया. Is this right, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा. This is very easy question. How much heat is required? How much heat is required? What is this particular thing? Delta H of vaporization. This will correspond to a particular reaction. We can say. जब भी आपके पास, if they have given any standard enthalpy of, each and every standard enthalpy of corresponds to a reaction. याद है आप? Harsha, Martin, and Abdul Hamid. Yes, ठीक sir. है. Can you please tell me what is this delta H vaporization? What is the enthalpy of vaporization in your notebook? It must be somewhere. Can you please find it out? Where is the enthalpy of vaporization? So for changing from 1 mole of liquid to gas. Mole of liquid to gas, right? So here we have water. So we'll have 1 mole of water that is liquid to gas. ठीक है. अच्छा, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल. For this particular thing, for 1 mole of water to be converted to gas, how much energy is required or how much heat is required? ये दिया हुआ ना आप लोगों को. ध्यान से देखिए. हाँ या ना बोलो भाई. Yes, sir. यही है ना? Yes, So sir. we can say
to evaporate 1 mole of water, 44010 joule of heat is required. Correct, guys? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, जूल पर मोल. अच्छा, what is 1 mole in terms of mass? Tell me ना. 1 mole of water in terms of mass. What is the molar mass of water? 18 gram. आ गया कि नहीं आया बताओ? As 1 mole of H2O is equal to 18 grams. Therefore, 18 gram of H2O would also require 44010. यूनिट सही लिख रहे हैं ना? 44010 जूल्स ऑफ हीट. समझ में आया सबको? हाँ या ना? जल्दी बताएं. यस सर. कुछ दिक्कत किसी को? हर्षा, अब्दुल? नहीं ना? मार्टिन? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है. नाउ डिड वी यूज एनी फॉर्मूला? क्या हमने कोई फॉर्मूला यूज किया? नहीं ना? क्या ये No. अगर अच्छा चलो ठीक है, मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 18 ग्राम ही रहता, इफ इट वाज लेट अस सपोज 9 ग्राम, अगर 9 ग्राम रहता, 18 ग्राम आपको तो ये दिया हुआ ना, 18 ग्राम के लिए कितना है? 1 mole of H2O is equal to what? 18 grams. They have already given you the amount of heat required to evaporate 18 gram of water. तो 9 ग्राम के लिए क्या हो जाता? 9 ग्राम of H2O. बताओ भाई यूनिटरी मेथड वालों, वुड रिक्वायर 18 ग्राम में इतनी हीट लग रही है, तो 9 ग्राम में कितना लगता? इसका डबल या आधा? हाफ, राइट? 44010 divided by 2 joules of heat would have been required. अब ये बताओ यार, ये यूनिटरी मेथड है कि नहीं? 5 चॉकलेट का दाम Yes, इतना, 18 चॉकलेट का दाम कितना? ऐसा ही सवाल है कि नहीं? बिल्कुल बताओ. क्या किसी Yes, फॉर्मूले sir. की जरूरत है? डू रिक्वायर एनी फॉर्मूला? नो सर. ठीक है, ध्यान रखिएगा. हाँ, जहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, देखिए इस चैप्टर में ना हम आपको ये नहीं चाहते कि इसका तो फॉर्मूला है, उसका भी फॉर्मूला है, ऐसे करके हम बिल्कुल बताएं. समझ की चीजों को चलिए, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम फॉर्मूले बच जाएंगे फिर. जैसे कि आपको इस यूनिट ने ही क्या बता दिया, यहाँ पे अगर आप यूनिट को भी देखते हैं ना, तब भी आपको समझ में आ जाता. 44.01 किलोजूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू evaporate 1 mole of water. पर मोल का मतलब तो यही हुआ ना, अगर आपको याद हो भाई, छोटी क्लास में तो पढ़ते थे 10 मीटर पर सेकेंड. दैट मींस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना भागेगा? 10 मीटर. यही तो था मतलब. तो यूनिट्स का इंटरप्रिटेशन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है ना? फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन. थर्मोडायनेमिक्स की बात से यूनिट का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से आ जाएंगे आप लोग को, ठीक है? ध्यान दीजिएगा. देन दे आर आस्किंग कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी तो हमारे लिए नई नहीं है. इफ यू रिमेंबर, वी हैव अ रिलेशनशिप दैट डेल्टा एच इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. क्या ये रिलेशनशिप याद आया? अरे हाँ ना बोलो भाई. ये रिलेशनशिप तो याद है ना? इसी के बारे में हम बहुत अच्छे से बोला बताया था हमने. यही एक रिएक्शन है, यही एक है आपके पास, इसके बारे में हमने बहुत खोल खोल के चीजों को आपको समझाया था. एक एक चीज यहाँ पे समझिए जरा. ये देखिए कहाँ गया आपका, ये देखिए, यही तो है ना. ब्रैकेट ब्रैकेट दे के बिल्कुल अच्छे से समझाया था आप लोगों को. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है? बाकी चीजों के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूले की याद रखने की जरूरत है. कन्वर्जन फ्रॉम एंथैल्पी टू एनर्जी, एंथैल्पी से इंटरनल एनर्जी में चेंज करने की. ध्यान दीजिए अब जरा. If I talk about delta Ng, so what is the reaction happening? 1 H2O, 1 mole of H2O, which is in liquid form, it converts to 1 mole of H2O, 1 mole of H2O in the gaseous form. So number of gas in the reactant, it is equal to how much? How many moles of gas is present in the reactant? Tell me, guys. Reactant में हाँ जी कितना है हर्षा? अरे लिक्विड है ना भाई, तो 0 हो जाएगा रिएक्टेंट में. ध्यान से देखिए, है ना? यहीं पे मिस्टेक्स होते हैं. Can you all of you see that it is liquid, right? It is not gas. The number of moles of gas in the product side, it is equal to 1 because here we have H2 gas. So delta Ng की अगर हम बात करें, it will be
which will be equal to 1. सबको समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा R क्या हो जाएगा आपके पास? R का वैल्यू आई नो, आई होप यू गाइस remember it by now, 8.314, and temperature will be equal to how much? 298 Kelvin as they have given. Now we just need to replace a few things. Delta U को आप क्या लिख देंगे? Because you want to calculate the delta U, it will be equal to delta H minus delta NGRT. So delta H is given as 44010 minus delta N is equal to 1 multiplied by R is 8.314 multiplied by the temperature, that is 298 Kelvin. ठीक, can you please calculate this value? इसको लिख लीजिए प्लीज, पहले आराम से सवाल को लिख लीजिए. This line is not important. I hope you guys remember. ये 9 ग्राम का हमने बस ऐसे ही बताया था. ठीक है, this is not very required. Let me know once you're done writing. What should we start? The next chapter कौन सा होना चाहिए बताइए जरा. Harsha, Martin, and Abdul Hamid. Do you have any priority for the next chapter? It should be equilibrium or something else if it is going on in your school. Organic chemistry. Organic chemistry. बाकी लोग को Martin and Abdul Hamid. Sir, I'm not sure. equilibrium is fine or organic chemistry. Yeah, I think organic chemistry will be fine. Organic chemistry will be fine. So we'll start organic chemistry then. Is everyone done writing? Please let me know.
My God, you are still writing, guys. जल्दी लिखें. Harsha, Martin, and Abdullah. You're done, sir. Abdul Hamid is done. Okay. Martin and Harsha. Harsha, you done? Yes, sir. अरे तो बोलो ना भाई. चलिए ध्यान दीजिए. Martin, you are still writing. Yes, sir. जल्दी लिखें. What are you still writing? So the unit will be kilojoule per mole, right? किलो जूल का नहीं पता. जूल पर मोल हो जाएगा. बिकॉज वी हैव राइट जूल पर मोल हो, नॉट किलो जूल. ठीक है. वंस यू गेट इट इन जूल पर मोल, आप उसको फिर किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. 300 8 3 are 24. So 240 after it's 44 4,000 4,000. It would be 4,000. Sorry, it will be 40,000 43,000 something, na Harsha? 43,000 40 1,500. We are done, sir. ओके. हाँ ठीक है. मैं ये करेक्ट सही है हर्षा. 41,000 ना 42,000 तक तो हमको दिख रहा है. यहाँ 41,000 समथिंग है. करेक्ट. इट विल बी 298 into 8314 विल बी 2400 के आसपास होगा, राइट. 2,400 के आसपास होगा, राइट. दिस वैल्यू. Yes, sir. ठीक. चलिए राइट दिस नेक्स्ट वन. Relate which of the following in which of the following entropy increases or decreases. Entropy अगर आपको याद हो, entropy is the, देखिए जितना entropy बढ़ता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, एनर्जी विल बी, एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब एनर्जी ज्यादा फैलने की चीज है ना. सो डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी इज व्हाट, एंट्रोपी. डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी इज एंट्रोपी. ध्यान से देखिएगा जरा. लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड. तो डिफ्यूज्ड से कंसंट्रेटेड हो गया ना. लिक्विड के पास ज्यादा एरिया था मूव करने के लिए, बट सॉलिड विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन वन एरिया, है ना. तो इफ यू गो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, देन ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एस विल बी नेगेटिव. एनर्जी डिस्पर्स नहीं हो रही है ना, एनर्जी तो फैल नहीं रही है. थिंग्स आर गेटिंग टुगेदर, थिंग्स आर गेटिंग कंसंट्रेटेड. करेक्ट. अब देखिए, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. तो आप जैसे ही वहां पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी डिस्पर्स्ड, राइट. इफ द एनर्जी इज डिस्पर्सिंग, देन द डेल्टा एस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बताएं. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट. अब आपके पास क्या है, हाँ यहां पे देख लीजिए जरा. इन द रिएक्टेंट वी हैव सॉलिड एंड सॉलिड, राइट. नहीं, रिएक्टेंट में आपके पास नहीं है. In the reactant, we have 2 mole of solid. In the product, we have 1 mole of solid and 2 moles of gas. तो ऐसा बिखरा हुआ कौन सा है ज्यादा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ज्यादा बिखरा हुआ ना. इट इज व्हाट, टेकिंग मोर वॉल्यूम. तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बढ़ रहा है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं जब आप, तो डेल्टा एस इज व्हाट, इट इज इंक्रीजिंग. Here we can see we have 1 mole of some gas, H2 है और 2H जो भी है, 1 mole of some gas. Here we have 2 moles of gas, है ना. ये गैस में लिखा हुआ है इन्होंने. Now tell me what is happening to the energy जो है डिसिपेट हो रही है ना. एनर्जी तो क्या हो रही है, इधर फैल रही है. 1 मोल से 2 मोल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है. सो ऑब्वियसली डेल्टा एस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. एनर्जी का डिस्पर्जन हो रहा है, राइट. एनर्जी इज गेटिंग डिस्पर्स्ड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. चलिए और एक सवाल प्लीज जरा. अब देखिए, ये जो अब जो सवाल आ रहे हैं ना, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे. इनको धैर्य से कीजिएगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ, ठीक है ना.
You can take a screenshot for this. ये बहुत ज्यादा hard नहीं. Just take a screenshot for this. नोटबुक में बात में लिख लीजिएगा. ठीक है. I'm waiting 5, 4, 3, 2 and 1. ठीक है. चलिए देखिए अगला सवाल. इस सवाल को थोड़ा लिखिए आराम से. जब आप लिखिएगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्या लिख रहे हैं आप, है ना. So please write this question down. All of you please write this down. आराम आराम से लिखिएगा. हम ये नहीं कह रहे कि रिएक्शन पूरा लिखना है आपको. रिएक्शन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए. एंट्रोपी चेंज थोड़ा समझ समझ के लिखिए. बस ये मेरा लिखने का मतलब. All of you wrote this down. Yes or no? Please tell me. Yes. ध्यान से देखिएगा. Clear guys. All of you please see. Don't write anything now. देखिए अब आराम से. कुछ लिखिएगा बस. ध्यान से देखिए. It is saying that this reaction, इसका एंट्रोपी चेंज क्या है? नेगेटिव है. एंट्रोपी चेंज क्या है? इट इज नेगेटिव. ठीक है. बट स्टिल दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. फिर भी क्या बोला? दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. वाई? यहाँ पे अपना दो अप्रोच ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को करने का. एक तो जो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है. इफ यू रिमेंबर द क्राइटेरिया, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस? डेल्टा एंट्रोपी के हिसाब से बताइए जरा. एंट्रोपी के हिसाब से जो पहला हमारे पास तो सबसे पहला क्राइटेरिया आया था. व्हाट वाज द फर्स्ट एंड ओनली क्राइटेरिया? पेज को पलट के देखें जरा. अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिखाया था. द ओनली क्राइटेरिया फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इज एंट्रोपी के लिहाज से. If you are looking at only at entropy, then the entropy Positive. of what? Entropy of what? नहीं दिखा किसी को? No one saw that in your notebook. इसी में होगा हमको लगता है जहां तक लास्ट क्लास में. हाँ जी. क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या लिखा है आपने? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड इंक्रीज. है ना? याद आया? हर्षा, अब्दुल हमीद एंड मार्टिन. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड. अरे बोलो भाई. हर्षा नहीं ध्यान आया? Increase. Increase. इंक्रीज. है ना? तो अब ये बताइए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड इंक्रीज यानी कि डेल्टा एस जो टोटल होगा. क्या मतलब डेल्टा एस टोटल का? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस द डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस शुड बी पॉजिटिव. दिस शुड बी पॉजिटिव. एक तो ये अप्रोच आप ले सकते हैं. अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट डेल्टा एस इज व्हाट? इट इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे आपको डेल्टा एस तो सिस्टम का दिया हुआ है. फॉर दिस रिएक्शन दे हैव गिवन द एंट्रोपी चेंज. You need to calculate the delta S of surrounding. अगर आपको याद हो डेल्टा S of surrounding क्या होगा? डेल्टा S of surrounding will be equal to, याद है किसी को? नहीं याद है? ये भी हमने कराया था. This is minus delta H of the system divided by temperature.
बच्चों को याद ही नहीं, ये देखो ये कराया, देखो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टेम्परेचर. कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? अब्दुल हमीद, मार्टिन एंड हर्षा. Yes, sir. Yes. ठीक है, फिर अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द h by t. तो आपके पास h सिस्टम पे कितना दिया हुआ है इन्होंने? दे हैव गिवन दिस एज -1648 into 10 to the power 3 डिवाइड बाय टेम्परेचर को ना 300 ले लेते हैं. किसी को कोई दिक्कत क्या? 298 से 300 कर ले तो न्यूमरेटर देखो कितना बड़ा नंबर है ना, इसमें 2 डिजिट पे ये करने कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, सो 1648 ये 2 जीरो और ये 10 टू दी पावर 3 कट के क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 1 हो जाएगा. करेक्ट गाइस? सो इनटू 10 बच जाएगा. सो 16480 डिवाइड बाय 3. बस इसको डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आ रहा है. दैट विल बी द डेल्टा. अच्छा, दिस विल बी ऑब्वियसली इन नेगेटिव. दिस इज 16480 divided by 3. This is coming out to be -5493.33 आ रहा है. सो 0.3 लिख Sir, दिया the हमने. unit for entropy of system is given per kilomoles. So do we have to change? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नहीं, कुछ नहीं करना है. जूल ये तो आ जाएगा ना. देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, the enthalpy of system they have given as joule per mole है ना. हाँ या ना. Yes, sir. और सराउंडिंग का हमको निकालना है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम. तो जूल पर मोल हमने रखा और यहाँ पे केल्विन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ पर मोल पर केल्विन आ गया ना सराउंडिंग का भी. हाँ जी हर्षा, Okay, yes, sir. got it. So अब now you just need to calculate the delta S total. Delta S total will be equal to how much? System per surrounding. सिस्टम क्या है आपके पास? कितना? -5494 जूल पर केल्विन, जो भी यूनिट है. एंड प्लस फॉर द सराउंडिंग इट इज इक्वल टू हाउ मच? नेगेटिव. माय बैड. देखो इसका पॉजिटिव में आ जाएगा. एक सेकेंड, दिस इज नेगेटिव. एक सेकेंड, थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई. सी हियर गाइस, डेल्टा एच सिस्टम इस फॉर्मूले में नेगेटिव है एंड द डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव है ना. करेक्ट. फॉर्मूले में तो नेगेटिव है ही. सिस्टम सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एच बाय सिस्टम. और डेल्टा एच जो है आपके पास सिस्टम का, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो दिस नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल एंड द आंसर विल बी पॉजिटिव. तो प्लस 5493.3 जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट दिस. अब आपको समझ में ही आ रहा है दैट डेल्टा एस टोटल विल बी पॉजिटिव एज यू कैन सी. क्यों? दिस इज लार्जर नंबर इज पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर नेगेटिव में, तो ऐड करेंगे जब इन दोनों को तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. एक तो ये तरीका है इस सवाल को करने का, ठीक है ना. दूसरा तरीका क्या है? आप डेल्टा जी निकाल लीजिए. डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. सब कुछ सिस्टम का लेना है आपको. डेल्टा एच कितना दिया हुआ सिस्टम का? -1648 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइनस टी डेल्टा एस कितना दिया हुआ है आपको? टी डेल्टा एस दिया हुआ है आपको. टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर हो गया आपके पास 300 मान लो इसको, इनटू द डेल्टा एस इट इज इक्वल टू -549. ठीक है, -549 जो भी आ जाएगा. ठीक है, नाउ दिस विल बी -164830 माइनस दिस विल बी इक्वल टू 549 into 3. 9 3s are 27. 4 is 12. 13 14. 4 is 15 and 16. So it will be 164700. अब बताइए, this will be also a negative है ना. -549 है तो आपके पास आ जाएगा -164800. माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 164700. अब बताइए कौन सा बड़ा है? नेगेटिव वाला बड़ा है या पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है? बताओ जरा, कौन सा नंबर बड़ा है? पॉजिटिव वाला बड़ा है या नेगेटिव वाला बड़ा है? देख के बताइए, नंबर गिन के बताओ भाई. पॉजिटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला बड़ा है? हाउ मेनी डिजिट्स? डिजिट्स तो काउंट कर लें. विच इज ग्रेटर? Negative.
तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव, एंड फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, याद आया, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस। तो दोनों ही प्रोसेस से आप कर सकते हैं, या तो आपने डेल्टा ये वाला ले लें, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया, बिकॉज व्हेन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज गिवन दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, अभी तक उन्होंने ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, बोथ ऑफ दीस मेथड, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, जल्दी से लिखिए इस वगैरह, लिखिए नहीं, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको लिख लीजिएगा बाद में, टेक अ स्क्रीनशॉट। हम बता रहे हैं आपको कुछ कुछ सवाल जो है ना वो आपको नहीं करने हैं, जो जो सवाल नहीं करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं, बिकॉज दोस क्वेश्चन दे रिक्वायर अ बिट ऑफ ये क्या नाम है उसका, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सो आई एम टेलिंग यू दैट वी विल नॉट डू द क्वेश्चंस 6.13 और 6.14 प्रॉब्लम्स में जो है, दैट मींस एग्जांपल में जो आपके पास 6.13 एंड 6.14, you will be able to do these problem only if you are done with the equilibrium chapter, उसके बाद ही हो पाएगा, बिकॉज वहां पे 50% डिसोसिएटेड वगैरह का उन्होंने कुछ कुछ चीजों को वहां पे डाला हुआ है, ठीक है। सो नॉट दैट क्वेश्चन, एंड you can do the question still 6.8 तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, 6.7 also I don't think you will have any difficulty. It's fine. Enthalpy of combustion of carbon, calculate the release gas, ठीक है, enthalpy, all the questions related to enthalpy you can easily do them, और कर लीजिएगा, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। 6.19 is also fine. I'm not talking about the exercise, I'm just looking at the questions right now. These are easy questions. अच्छा, 6.19 देखिए जरा, look at the question 6.19. 6.19 ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या ख्याल रखना वो बता दें। यहाँ पे the only one formula that is very very important ना, वो यहाँ पे बहुत बहुत बार यूज होगा वो फॉर्मूला आपके साथ, देखिए जरा। For a reaction, they have given this value. They have given the delta U. They have given the delta S. They're asking about the delta G. But we know that what is delta G? Delta G, it is equal to delta H minus T delta S, right? Minus T delta S. They have given the temperature. इन्होंने temperature नहीं दिया है, सबसे पहली दिक्कत। देखिए आप लोगों को, can all of you see guys? The temperature is not given. हाँ या ना? Yes, अरे sir. भूलो भाई, ठीक है, टेम्परेचर नहीं दिया। अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे बताइए, कुछ तो होगा उपाय, क्या करेंगे? टेम्परेचर इज नॉट गिवन, कोई उपाय नहीं है इसका, टेम्परेचर नहीं दिया तो। हाँ जी, यस मार्टिन, मार्टिन कोई तो बोलो भाई, कुछ तो होगा। नहीं है क्या? अरे सुन लो सुनो सुनो, बोला किसी का तो आंसर आ जाएगा। सुनिए गई, अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर ले लेंगे ना। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन, सही है, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन ऑलवेज टेक 298 केल्विन। और दूसरी चीज, डेल्टा एच भी तो नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। तो डेल्टा एच के लिए आप लोग रोने मत लगिएगा, डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला है आपके पास, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहां से निकालना पड़ेगा। हियर यू हैव टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन reactant, it is equal to 2 plus 1, 3. Number of moles of gas in the product will be equal to 2. So product minus reactant will be equal to -1, है ना। तो आपके पास डेल्टा एनजी निकल गया, डेल्टा यू दिया हुआ आपको, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट डेल्टा एच, डेल्टा एच को यहाँ पे प्लग इन कीजिएगा, टेम्परेचर है आपके पास, डेल्टा एस आपके पास है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में आपको डेल्टा एच की जरूरत पड़ेगी, एंड टी इज 298 केल्विन। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, equilibrium constant. Wherever you see equilibrium constant, you please ignore that question, ठीक है ना, for now,
ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी, इसमें आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होगी। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन वन मोर फ्रॉम द स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है गाइस, जो सवाल नहीं करने आपको हमने बता दिया, देयर आर ओनली 22 क्वेश्चंस इन द एनसीईआरटी, आप आराम से इन 3 दिनों में आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगली जो क्लास होगी दैट इज टुमारो, वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दीज एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो टुमारो, है ना। और आपके पास नेक्स्ट वीक तक का टाइम है थर्मोडायनामिक्स के लिए, हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके पास ही नेक्स्ट वीक तक का टाइम है, ये बात आप थोड़ा समझिए, जब हम बोलते हैं ना एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए एंड यू हैव ओनली टिल, वो मेरे लिए नहीं कि आप हमको सवाल ला के देंगे, आई विल नॉट सॉल्व दोस क्वेश्चंस फॉर यू इफ यू हैव एनी डाउट, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इसके